Happy evening all. Join here for the third session of Amrit Vani. I'm Vipin, principal here at Amrit Vidyalaya. Let me introduce Amrit Vidyalaya to our esteemed guest speaker, Mr. Nirav Karkera sir. Amrit Vidyalaya is situated in Panchmal district of Gujarat, currently having more than 600 students in this school. This is an English medium school, state board affiliated, offering education to the students right from Balwadi to 12th standard, both commerce and science streams. This school strongly believes in core values of learning for understanding, and all the activities which are planned sync well with the core belief of this school. I welcome sir today to talk in the third session of Amrit Vani. Over to you. So good evening, everyone. Let me introduce Nirav Karkera, sir. Nirav Karkera is the head of research at Fisdom, a leading wealth tech brand in India. Nirav specializes in portfolio management and economic analytics. He is best known for translating macroeconomic developments and behavioral economics principles into strong portfolio strategies. Nirav has been instrumental in driving investment success for retail as well as institutional investors. Academically, he has completed his master's degree specializing in business management and PGDM with financial management. Right before Fisdom, Nirav worked with CRISIL and contributed to the credit analysis and corporate credit rating functions. He is a known writer and trainer in the personal finance segment. He is among the preferred speakers at several investor forums and corporate houses. We welcome you, sir, with a very warm heart. Hi, thank you, Vipin. Thank you, Janki, for this very, very warm introduction. I am super excited to have this conversation today. Over the course of the conversation, I'll be using a mix of languages. I'm sure Hindi and English, a mix of these two, it will work just fine. So guys, I'm really happy to see all of you. At Saturday शाम को इतने सारे लोग एक साथ आए to talk about money and finance. I feel this has something to do with the way the people of Gujarat are, right? कभी भी पैसे की बात हो तो आधी रात हो तो जगा दो. No one's ever too busy to talk about money. And I'm just so glad that you're having this conversation today. Obviously, for whoever it is possible, if you could switch on the videos, it would be really fun, because it kind of gets difficult to talk to small black boxes. So if it is just possible, right? So anyways, guys, before we start, I just wanted to make this an engaging session. इसीलिए मेरे पास दो options थे, या तो एक presentation भी carry कर सकता था, or I could have just made it a free flowing conversational thing. And I feel that presentations are boring, right? I keep doing it day in, day out, not fun beyond the point. So let's chat, right? Let's be interactive. I feel although it might be difficult if people start unmuting themselves, let's be really active on the chat box. जिन्होंने फोन से लॉगिन किया होगा, बॉटम में एक चैट का ऑप्शन होगा, लैपटॉप से लॉगिन किया होगा, उनको एक चैट का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा. So let's just engage a bit. Let me just get a sense of where are we right now, and how do we go from here, right? So right before that, I want to share a small anecdote, and I will this will set the tone for the rest of the conversation that we have. Okay. Visualize as I speak. एक आदमी है, right? एक इंसान है. He is participating in a game. The game is precisely a race.
ठीक है, वो दौड़ रहा है, उसका जो एंड टारगेट है, फिनिश लाइन है उसके पास, राइट? एंड उसे वो रेस में दौड़ते हुए आगे बढ़ना है और जीतना है, एंड जीत उसी का होगा जो फाइनल लाइन क्रॉस कर लेता है। बट देयर इज अनदर कैच, राइट? दौड़ते हुए व्हाट दे हैव टू डू इज, रास्ते पे जाते जाते देयर विल बी मेनी गोल्ड कॉइन्स ऑन द वे, ओके? दिस कुड बी 100 गोल्ड कॉइन्स, दिस कुड बी 1000 गोल्ड कॉइन्स, किसी किसी के लिए 50 गोल्ड कॉइन, डिपेंडिंग ऑन द टर्न दैट दे टेक। हर एक का फिनिश लाइन अलग है, राइट? He can choose whichever route he wants, but the only condition is he has to pick as many gold coins as he can while along the way, because once he crosses the finish line, that is his reward. जो 1 लाख सोने के सिक्के जमा कर पाया वो 1 लाख सोने के सिक्के लेके घर जाएगा, जो केवल 2 सिक्के जमा कर पाया वो 2 सिक्के लेके घर जाएगा, राइट? दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज अ स्टैंडर्ड गेम, एंड दिस इज द रिवॉर्ड दैट लाइज एट द एंड ऑफ इट, राइट? अब मान लीजिए ये जो इंसान है ये दौड़ना शुरू कर देता है, ये दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, काफी लंबी दौड़ दौड़ते रहता है, बीच बीच में थक जाता है, आराम करता है, फिर से उठता है, फिर से दौड़ता है, राइट? एंड ही कीप्स डूइंग दिस डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, decades after decade, before he finally reaches the finish line. Now along the way he has managed to pick just too many gold coins, because उसे याद है कि हर दूसरे कदम पे उसे एक सोने का सिक्का मिल रहा था, और वो क्या कर रहा था, दौड़ते दौड़ते जल्दी से वो सोने का सिक्का उठा रहा था और जेब में डाल रहा था, और फिर से भाग रहा था, फिर से सोने का सिक्का मिला, उठाया, जेब में डाल दिया, और फिर से भागने लग गया, right? So he was doing this continuously, right? Just picking the coin, putting it, shoving it into his pocket and running, and by the time he reached the finish line, he realized that his pocket had a hole all along the way. Yeah, let that sink. Someone who has been running for days after days, months after months, years after years, decades after decades, just picking every gold coin, shoving it enthusiastically into his pocket, and at the finish line, he realizes that there was a hole in his pocket. Let me tell you, each one of us here, including me, is that person in some form or other. Now let's get to how. Obviously बहुतों को लगा होगा कि यार ऐसा तो नहीं है, मेरे पॉकेट में होल नहीं है, मुझे तो पूरा होश है, मुझे पता है मेरे पैसे का क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, right? I'm sure by now you have realized the analogies about you earning and hitting that point in life where you can no longer earn, right? And I'm sure each one of you are pretty confident, नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे exactly पता है ये महीने राशन के बिल में मैंने कितना भरा है, कि हर महीने सैलरी में तनख्वाह में कितना मिलता है, but let me also prove it to you, okay? And let's see how do we go with it. So guys, let's do the small exercise, okay? Stay with me, let's make it fun, engaging. I will also do it with you, okay? Each one of us here have been earning since quite a number of years now, at least 1 साल के ऊपर से तो कमा रहे हैं. Just remember the first day you got your first salary, right? Especially parents and teachers here, your first salary, your first paycheck, किसी ने 16 साल की उम्र में शुरुआत की होगी, किसी ने 20 पे, किसी ने 25 पे, जब भी शुरुआत की होगी, एक पहला चेक तो हर एक को याद होता है अपने लाइफ का, राइट? आज का आपका जो मोस्ट रिसेंट पे चेक है उसको याद कीजिए, बहुत अंतर है, राइट? मोस्ट ऑफ यू हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस. वो जो पहला तनख्वाह था और आज का जो तनख्वाह है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट? उसके बीच में काफी सारे इंक्रीमेंट्स भी मिले होंगे, काफी प्रोग्रेस की होगी, ईयर आफ्टर ईयर, मंथ आफ्टर मंथ आपकी सैलरी भी बढ़ गई होगी इतने सालों में. तो जस्ट डू दिस वन एक्सरसाइज विद मी. आई वांट यू टू मोटा मोटा जस्ट एड अप, आपने जब से कमाने की शुरुआत की है तब से लेके आज तक आपने कितने रुपए कमाए हैं. जस्ट एड दैट अप. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर द आंसर्स, ओके? सो डोंट वरी, मैं नहीं पूछूंगा किसने कितना कमाया. आई वोंट आस्क यू टू रिवील एनी ऑफ दैट. Just be free, take a moment, okay? I will wait for, generally I wait for a minute, but I know all of you are from Gujarat, so you can do it in less than 30 seconds. I know you're blessed with great mathematics, so I'll wait for just 30 seconds. I want each one of you to just mota add it up. Just for example, let's say your first CTC was 2 lakh rupees साल का, उसके बाद appraisal हुआ 3 लाख हुआ, so 2 plus 3 is 5. तीसरे साल में 6 लाख हुआ, 3 plus 6 is 9. मोटा एक अंदाजा, जिनके बहुत सारे साल हो गए, प्लीज थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, लेकिन जस्ट कंप्यूट इट, राइट? I'm intentionally taking a 30-second pause because I want each one of you to compute this. Don't worry, I will not ask, but please compute it.
And I'm intentionally being silent. हाँ, speaker का issue नहीं है. Yeah, good. Are we at least getting close to it? अब जिन्होंने बहुत ज्यादा कमाया उनको थोड़ा तकलीफ होगा कि यार इतना 10 डिजिट में तो गिनती कैसे ऐड अप कर रहे हैं. But still, all of you round it up, right? You have a rough figure in your head. Does everyone have a rough figure in their head? Very rough. Just respond in the chat box with a yes or no. Someone needs more time, please tell that, 5 seconds more. Just but respond on the chat. Yeah, Janki, yes. Okay, great. Guys, it would be fun if we just interact. This is the only way we can. Yeah, yeah. Need to see a couple of more yeses. Yeah. Okay. Okay. Fine. Okay, great. That's great. That's great. So each one of you have this figure in your head. Are you feeling good about it? Are you happy? No? और भूख है? Generally it works when I say this in Mumbai. लोग बोलते बहुत कर लिया यार. But I understand the lay of land in Dunia जितना वो कम है. Right? दिल मांगे more. So, but but I feel isn't that a respectable amount that you have earned? Yeah, so far at least it is worthy of respect, right? It's a big amount. It's not easy for people to make even a fraction of it, right? They spend their lifetimes and they cannot make a fraction of the figure that you have arrived at, right? Now visualize that figure continuously as I speak. See that figure in front of you, and now visualize another figure, and this figure is what is in your bank account right now as we speak. Oh, really bad. Oh, generally, I have people come up to me, Nirav, why do you do this? I was having my moment of glory. I was so happy कि यार अच्छा ग्राफ से कमा लिया. But अचानक से याद करो अपने अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं आज के दिन. अब सवाल ये है कि ये जो डिफरेंस है जो आपने कमाए हैं जो बहुत बड़ा अमाउंट है वर्सेस जो आज आपके बैंक अकाउंट में. आई डोंट नो द फिगर्स बट इज द डिफरेंस ह्यूज? या अब मुझे इस चीज का जवाब दीजिए. हाउ मेनी ऑफ यू कैन कन्विंसिंगली टेल मी वो पैसा गया कहाँ? my mom used to tell me a story. So my mom's a Gujarati. Chopdi maintain karte hisab nahi. Chopdi is very important in Gujju households. Right? This nice small diary with a pen. दिन भर मतलब एक 2 रुपए का चॉकलेट भी खरीदा तो लिख देते तुरंत कि इतने का खर्चा किया. Right? And my mom used to say that my nani, right, whenever she used to tally the hisab with my nana ji, तो नाना जी पूछते थे ये इसमें हर महीने तुम कभी 500 रुपया, कभी 600 रुपया, कभी 1000 रुपया राजा को दे रही हो. ये राजा कौन है? So my nani used to say वो राजा नहीं, it's short for Ramjan. I don't know where did that money go, right? So is this difference attributable to Raja even for you guys? कि जितने पैसे कमाए हैं और जितना बैंक अकाउंट में उसके बीच का जो अंतर है क्या वो भी राजा के पास चला गया? Now my second question to you is, are you very sure that you don't have a hole in your pocket even after this? Yeah, hole तो है. किसी का बड़ा किसी का छोटा लेकिन hole तो है, right? And I feel that's what I'm going to dedicate this entire conversation to. I'm no tailor. I'm not going to tell you how to stitch that hole, absolutely, but I will tell you ways in which you can at least have a better pocket. Okay, that is what I'm going to dedicate the rest of the conversation to. So guys, fun activity. I feel there's no better way to start a financial conversation than with a realization of how bad we are at our finances, including me. Okay, I'm guilty. I count myself as guilty number 1. Right. That's nice. Yeah. So guys, this is something that happens because we are not very conscious about our own money. Okay. And when I say conscious, the number one thing is about being conscious about your money is to have a relationship with your money. Okay.
you need to have a very good, healthy, strong relationship with your money. I know बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार हमें लगा कि immediately stock tips दे देगा, बता देगा किस में पैसे डालो, 21 दिन में पैसे डबल, but I don't do that. But let me tell you, I'm going to reveal a lot many things in so much more context. I don't know if it'll make you rich or not, but it will definitely give you some perspective. That's my objective here, right? And if I can't leave you with more answers, I'll at least try to leave you with more questions. I feel curiosity, jignasa is where all growth begins, right? And the same goes with financial progress. So guys, I was talking about the relationship with money, right? And let me ask a question to each one of you. Okay. Do you guys respect your money? Please respond in the chat box. I would love to hear. I'm so sorry I'm making you guys type. It's just because I can't see many of you here and we are not in person. So I'm making you type, but yeah, just type it out. Do you respect your money? Definitely. Yeah. Oh, Janki asked, do you respect money? I think that's for the audience. If you ask me, yes, I do. If that question was for me, yes, I do. Of course, yes. I love the of course, right? It is so audacious, dude. Paisa, right? Obviously, we respect it 100%. Now, also help me with another bit of information. See, I don't know you guys. I don't know your personal this. So you need to help me understand you. How many? Oh, Shriti, lovely answer. At some point in time, we forget to respect. Yeah, but isn't that what we do generally in life, even with people? But that's another conversation. So also help me understand you guys better. How many of you have invested in at least one insurance policy? LIC का हो सकता है, कोई और कंपनी का हो सकता है. अगर LIC है तो LIC लिख दीजिए. कोई इंश्योरेंस है, I'm not going to ask what policy, what details, what are. Just have you invested in, yeah, just respond with yes, LIC, yeah. Shriti has, Shilpa has, Unnati has, Bhavesh has, yeah, at least one policy. Yep. Janki, yes, LIC, Sadhna, Mona, Realme X7 has also done it. Gia, okay, Gia, car insurance, fine, but more from an investment standpoint, कि एक policy निकाल लिया हो types. Unnati, Mansi, Shriti, bonds, yeah, fine, great, fantastic. I feel all of you have invested in at least one policy. ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा तो छोटा कभी ना कभी invest किया ही होगा, because this is a charming thing about the insurance company. And you know, I can go ahead and say that there are at least 80% of the people who hold a policy has been sold a policy by their own relative, who is an agent and who is earning really well just by doing this, right? I can go far to make that prophecy, but I'll get to the major point that I'm making. आप सभी ने लिखा है कि yes invest किया. जिन्होंने yes कहा है, उनमें से how many of you have read the entire policy document, which is anywhere between 50 to 80 pages from end to end, have read it completely, have understood it completely, and have done the mathematics on your own calculator before putting your money in it? Be honest, guys. I'll tell you, I have a policy. I did not. Okay, let me take an initiative. I did not. In fact, I feel it's slightly more embarrassing for me because this is what I do day in and day out, and I still did not. Right? So, yeah, same. I'm not. Now tell me, guys, each one of you are working. आप सभी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, right? अब सभी के लिए सबसे ज्यादा important आपके लाइफ में आपकी फैमिली की खुशी है, right? I can take that bet. Nothing comes above your family's happiness, right? आपके पार्टनर की खुशी, आपके बच्चों की खुशी, right? That means everything. You are willing to forego any amount of money for your child's happiness. Money doesn't matter, right? इतना कीमती जो आपका परिवार है और परिवार की खुशी है, you know, जो उनका साथ है, जो इतनी कीमती है आपको, आप वो सब छोड़ के दिन के 8 से 12 घंटे के करीब, which is almost half a day, आप आपके नौकरी पे बिताते हो, right? Traveling include करके, you spend almost half your day, and if you look at it from a longer perspective, half your life staying away from the family that you love the most, just so that you can provide enough for them to be happy, right? I call that a sacrifice, right? Every parent, the number one learning for every parent out here is sacrifice, right?
The moment you become a parent is when you really learn the meaning of sacrifice. And sacrifice does not mean the भूखे पेट सोना. Sacrifice means जो बच्चा आपको इतना प्यारा है उससे दूर 2 मिनट भी गुजारना, right? To be at office while you know your child is at home and you could be spending that time. आप में से कई के बच्चे काफी 12, 13, 14, 15 वर्ष के हो गए ऑलरेडी, राइट? टीनेजर्स, और कभी पीछे मुड़ के देखोगे बोलोगे यार ये टाइम ऐसा चला गया, अभी तो छोटी सी थी, अभी तो छोटा सा था, टाइम चला गया, बिकॉज यू आर टू बिजी फॉर इट, राइट? So am I audible now? Am I clear now? Better? Someone just said that I need to increase my mic volume. I hope this is better. So guys, you spend a lot of time away from your children, from your family, to earn hard, work hard. Every rupee that you earn is on the basis of a sacrifice. And then what do you do with your money? You put it in something that you even don't bother to read. You stayed away from your family to earn an X amount, and then you invest your money, or rather put your money into an instrument that you don't even understand, that you haven't even read about. Now, for everyone who's told me that they do respect their money, do you still feel the same about it? Are you actually respecting your money? To earn this money, you left your family behind. You left your comforts behind. You left your luxury behind. You spend half your life working really, really hard to earn this money. And then you come and put it into something where you did not even bother to read 50 pages or to understand 50 pages. I don't think this qualifies as respect. What do you guys think? Definitely far from respect, right? Let's be very honest. I know, this conversation that we are going to have, it is going to take some really uncomfortable turns. But I feel it is important that we accept the truth, right? We need to embrace the truth and then move ahead from it. So guys, I feel जो सबसे पहली सीख होती है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, या फिर मान लीजिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, होता है टू हैव अ स्ट्रांग रिलेशनशिप विद योर मनी एंड हैव अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर ओन मनी. अगर आप आपके पैसे की कीमत नहीं करोगे या रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो वो पैसे भी आप सही टाइम पे आने पर आपको रिस्पेक्ट लाके नहीं दे पाएगा, right? And when I say respect, I'm not talking about societal respect, I'm talking about self respect, right? At some point down the line लाइफ में हम सभी को कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत होती है, जिसके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, राइट? So you realize that these are the things that we are not really doing in line. And this brings me to the next thing. What can we do to fix it, right? We need to understand a few basic principles. Okay, first, treat your money with respect. Ask a lot many questions. Okay, this conversation will also include a Q&A round. I'm hoping, expecting, and looking forward to. Ask really good questions. Ask stupid questions. Okay, it doesn't matter, because it's okay to be stupid and financially independent instead of being intelligent and financially broke any day. Okay, so please ask questions. Don't worry about it. Ask the right questions, right? And when I ask about the right questions, I have one question for you guys. Where do you guys invest your money generally? Just use the chat box again. Just type it out. Where do you invest? FD, gold, bonds, LICs, कहाँ पे invest करता? FD, gold, yeah, gold. Okay, great. Guys, some more responses. I know there is a set of people जो बोलते पैसा बचेगा तो invest करेंगे, पैसे बचते ही नहीं है. But that is a discipline question. But still, if you have, stocks, insurance, property, few scripts, NFT, great. Non-fungible tokens, I love it. Okay, gold, LIC, वगैरह, right, guys? The most important question while investing, right? What is the most important question that you need to ask yourselves while investing in something? Or let's say the top 2 most important questions. Type that out. Return कितना है और risk क्या है, right? Nothing else matters. एक तो कितना पैसे कमा सकता हूँ,
और ये कमाने की क्या गुंजाइश है, right? That matters a lot, right? Return and risk is the entire game. Now, let me tell you, whatever LIC policy you hold, etc., you did not ask this question. Even you don't know the return. You just know कि मुझे ये उम्र पे ये lump sum amount मिलेगा. If I ask you the percentage, you won't have any idea. You cannot, right? You haven't paid that attention. So guys, a very important thing to ask while investing is risk कितना है और return कितना है. Return कितना है? Now there is one question to you. अगर आपको financially independent होना है आगे जाके, right? What is the return that you must chase? ठीक है? What is a good return according to you? What is a good return? Just put in your figures. What do you think is a good return on any investment? Doesn't matter आपका investment को return दे पा रहा है या नहीं. सवाल ये कि आपके हिसाब से अच्छा रिटर्न क्या होता है? What's a good return? 20 to 25%? Okay. I remember this is the same guy who invests in NFTs. I'll have a separate conversation. Great. 10 to 20%? Oh, wow. The brackets are crazy. 10 to 20%. Okay. What else? Guys, give me a few more percentages. Yeah, 10%. Okay, guys. So let us get to the next bit. That is, each one of you has a percent in your head. But सवाल ये उठता है कि ये percent क्यों? For instance, let me just pick someone. I feel the typing is getting too monotonous. People are getting tired of typing. So Hriday, you said 20 to 25%. Why do you say so? You can unmute and speak, Hriday. Sir, I think that way it will get more because it would fall in a category of not wishing for more or less. So I thought like it is like not impossible or like not bad also. So अच्छा, ठीक है. Okay, fine. Understood. Shriti, you said 10 to 20%, quite a bracket there. Why would you say so? I mean, why do you feel that's a good return? Actually, if we are investing safely, 10% is max we can expect. And if we increase the risk zone, we may stretch it to 20%. Okay. So guys, Zeal, 10%. Why? Again, I'm presuming it's a similar thing, but why don't you tell us? According to me, I would be happy with the 10% because it will reduce the risk amount. And secondly, the money I've invested would be actually figure amount would be more than the money I've invested in a less time. I think so. Achha, theek hai. Great. So you say that you'll be happy with 10%, right? I'm going to once again get back to you three so that we can have a conversation here and it'll help the rest. Zeal, you said that you'll be happy with 10%. Are you not going to be happy with 15%? I would be, but I think it would increase my risk amount, which may affect my stocks where I am investing or any of the thing I'm investing. Do you think 8% will be bad? No, 8% would not be bad. I think it should be more than approx 7%. Okay, fair enough. Shriti, you said that risk बढ़ जाएगा तो 20% जितना हो सकता है और अगर safe investment करना है तो at the max 10% ले सकते हैं. And by the way, when we speak, FDs are giving around 5.5%. I don't know how safe are you talking for 10%, but but अगर मैं साथ में ये कह दूं कि अगर risk बढ़ाना ही है तो केवल 20% पे क्यों रुक जा रहे हो आप? 40% भी कमाया जा सकता है सही रिस्क लिया जाए तो. Possible, but it needs more. I don't know what do it needs. Right. Okay, fine. No problem. See, guys, I'm just having a conversation. Okay, there's no right or wrong answer. It's like return can be possible, but exact proper path requires. Okay, fair, no problem. हृदय, आपने 20 से 25% कहा है. आप तो NFT में भी इन्वेस्ट करते हो. So NFT में जो इन्वेस्ट करता है उनके लिए तो डबल डिजिट परसेंटेजेस में बात करना ऑलमोस्ट पाप है. Right? So why did you cap? You said that you feel 20 to 25% is a
is a nice number, because this will ensure that your money increases at a good rate. But then why not chase 50%? Why not? So because I think that to get 50%, I should have that knowledge of how things are and how to invest. But I don't think I have that. And another thing is that I think if we go for more percentage, then it might also increase the. Okay. Okay, fine. Understood. It might increase the risk, I'm presuming. Yes. So guys, let me tell you one thing, right? जितना आप सोचोगे ना, कोई ठोस वजह नहीं है ये फिगर्स की, राइट? कि 10% क्यों, 11 क्यों नहीं, 11 क्यों, 12 क्यों नहीं? बस मन को अच्छा लगता है। एक 10% जितना आ जाएगा तो 10 साल में इतना पैसा बनेगा, वो उसके बाद ब्याज आता रहेगा, घर चलता रहेगा, that is the normal tendency that we have. But let me tell you that there is a scientific way to at least have a lower base of what is your targeted earnings, what earnings you should target. At any given point in time, you must target to earn at least more than inflation. ठीक है, महंगाई से तेज आपके सेविंग्स बढ़ने चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। आप इन्वेस्ट किस लिए करते हो? कि आगे जाके ये पैसे आपके काम आए। मनी इन इटसेल्फ इज नथिंग, मनी इज जस्ट परचेसिंग पावर, राइट? आप पैसे का और कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? आप चाहे इन्वेस्ट कर लीजिए या सेव कर लीजिए, एंड में वो कंज्यूम होना है, आपको उससे कुछ ना कुछ खरीदना है। वो पैसे का आप प्लेट तो नहीं बनाओगे, एक्सेप्ट अगर आपके पास डिमोनेटाइज्ड नोट्स हो अभी भी तो बट डिफरेंट स्टोरी। अब देयर इज नथिंग एल्स, राइट? यू नीड टू बाय समथिंग, इट इज अ परचेसिंग पावर, यू शुड बी एबल टू सस्टेन योर लाइफस्टाइल, राइट? अगर आज मान लीजिए इन्फ्लेशन अराउंड 10% है, आप में से काफी लोग रेंटल के घर में रहते होंगे, वहां पे जो ईयर ओवर ईयर एस्केलेशन होता है वो 6% से 10% के बीच में होता है कहीं, राइट? अराउंड 10% तो स्टेप अप बढ़ ही जाता है। जिनके घरों में रेगुलर मेडिकल सप्लाईज आते हैं, जिनके घर में कोई बुजुर्ग हो या कोई समवन हु इज हैविंग अ मेडिकल एलिमेंट, उनके लिए जो मेडिकल बिल्स होते हैं, आपने नोटिस किया अप्रोक्सीमेटली 10% ईयर ओवर ईयर उसका खर्चा बढ़ जाता है। बीमारी वही है, दवाई वही है, लेकिन खर्चा 10% से बढ़ जाता है। अब अभी जितने लोग हिसाब की चोपड़ी मेंटेन करते हैं और रेगुलरली हिसाब रखते हैं, नोटिस करोगे कि राशन भी ईयर ओवर ईयर एटलीस्ट 10% से तो भाव बढ़ते जाता है, राइट? कुछ भी करो 10% से भाव बढ़ रहा है। कईयों के बच्चों ने बहुत सालों से दे आर प्रीटी ओल्ड इनफ टू let's say they being 13 14 15 years old and having a good 8 to 10 years of education, और एक काफी पेन पॉइंट भी है, फीस भी बढ़ता रहता है, राइट? ईयर ओवर ईयर, ओवर अ लॉन्गर टर्म अगर देखोगे तो मोटा मोटा 8 से 10% जितना बढ़ जाता है ईयर ओवर ईयर। अगर चीजें अप्रोक्सीमेटली 10% से महंगी हो रही है, ओके, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उससे ज्यादा कमा के आपको देना चाहिए। बिकॉज मान लीजिए अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि अगले साल में रिटायर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, राइट? अगले साल से मैं कमाऊंगा नहीं, योर एक्सपेक्टेशन इज ये पैसे शुड हेल्प मी सस्टेन द एक्सपेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर, राइट? लेकिन व्हाट हैपेंस इज, आज जो 1 किलो दाल 100 रुपए की है, जो कि मुझे पता है 100 नहीं है, 120 130 की हो चुकी है, बट फॉर मैथमेटिकल से, राइट, 100 रुपए की जो दाल है 1 किलो, वो अगले साल जाकर 110 रुपए की होने वाली है 1 किलो, राइट? अगर आपने ये पैसे 100 रुपए गुल्लक में अगर सेव किए होते हैं तो अगले साल आपको 900 ग्राम दाल ही खाना पड़ेगा, 1 किलो नहीं खा पाओगे। और उसके अगले साल अगर देखोगे तो 121 रुपए हो जाएंगे दाल के, तब आपको 750 800 ग्राम ही दाल खाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता गया तो खिचड़ी इज गोइंग टू बी अ लग्जरी आफ्टर 10 years, क्योंकि दाल नहीं परवड़ने वाला, राइट? सो खिचड़ी विल नो लॉन्गर बी अ सिंपल फूड। This is what inflation does to your money, right? And whenever you invest, you must ensure that in the longer term, at least money is growing at a pace faster than inflation. अब इन्फ्लेशन देखिए, आरबीआई का अलग सा फिगर होता है, न्यूज में अलग फिगर्स आते हैं। आप देखिए आपके लिए एक इन्फ्लेशन थ्रेशोल्ड क्या होता है, राइट? और वो एक पकड़ लीजिए 10% है। अब आप आपका पॉलिसी देखिए, आई कैन ऑलमोस्ट से दैट यू डू द मैथ, वेरी स्लिम चांस इट विल क्रॉस 7%. Look at fixed deposits today, 5.5%. A few people said stocks and mutual funds. That is another beauty of equities as a category, जहाँ पे over a longer period
a lot of money, inflation beating money can be created, ठीक है, but this is not for trading, this is for investing. Discipline SIP के माध्यम से आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे लंबे समय के लिए आपका रिटर्न्स बन जाएगा, right? And I'll tell you it is very logical also. I'll also explain the logic why. अभी तक हमें ये समझ में आया कि हमें इन्फ्लेशन से तो ज्यादा करना ही है, नहीं तो खिचड़ी is going to get expensive, right? Now using the same context, when we talk about mutual funds क्या करते हैं? वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. शेयर्स क्या होता है? एक कंपनी का एक परसेंटेज ऑफ ओनरशिप होता है, राइट? नाउ व्हाई does equities always at least return more than inflation? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, राइट? अगर आप सोचते हैं कि मान लीजिए आपको अगर इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से देखा जाए, राइट? इन्फ्लेशन अगर 10% है, आप देख रहे हो कि अभी एफडी के रेट्स अराउंड 5.5-6% है, राइट? अगर बैंक आपको 6% आपके एफडी पे दे रहा है, तब अगर वो आपको लोन देना चाहता है तो उसको उस पे कमाई तो कमाना पड़ेगा, राइट? They'll have to earn more so that they can remain profitable. वो आपको लोन कितने पे देता है? 8-8.5% पे अप्रॉक्स. होम लोन का अलग होता है, कार लोन का अलग होता है, डिफरेंट, बट मोटा 8.5%. वो जो 2.5% का गैप है वो उनका कमाई है, राइट? वो 8.5%. अब 8.5% पे आप लोन ले रहे हो तो वो जो गाड़ी है, वो जो घर है, वो बनाने के लिए और बड़ा लोन लगेगा, और ज्यादा रिस्क लगेगा कंपनीज को, राइट? अगर आज टाटा मोटर्स को अगर लेना हो लोन, या आज मान लीजिए गोदरेज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को लेना हो, तो उनको और ज्यादा पैसे चाहिए. अब और ज्यादा पैसे तो रिस्क भी ज्यादा है. रिस्क जैसे ज्यादा होता है बैंक चार्जेस भी ज्यादा लेगा, राइट? दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि आपका पर्सनल लोन क्यों 12 से 14% होती है और होम लोन क्यों 7 to 7.5% होती है. बिकॉज लोगों को पता है कि यार, अगर बैंक्स को पता होता है कि अगर आपने लोन रिपे नहीं किया तो बहुत रिस्क है, आप तो भाग सकते हो, फरार हो सकते हो. लेकिन अगर आपने होम लोन लिया है तो आप घर तो सर पे लेके नहीं भाग सकते, राइट? सो इट इज मोर सिक्योर्ड, सो दे आर ओके एट 7.5% इंटरेस्ट. बट पर्सनल लोन मोर रिस्क, दे नीड टू अर्न मोर रिटर्न्स. हमने बात की ज्यादा रिस्क लेंगे तभी ज्यादा रिटर्न्स, तो बैंक भी धंधा चला रहा है, वो ज्यादा रिस्क ले रहा है तो उसको ज्यादा रिटर्न्स की अपेक्षा है. तो वो जब ऐसे रिस्की बेट्स लेते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, रियल एस्टेट डेवलपर्स और कार मैन्युफैक्चरर्स को लोन देता है, जो कि बड़ी कंपनी है, उनको तकरीबन 10 से 12% के बीच में लेंडिंग करता है. आप में से कई लोग हैं जो बिजनेस भी चलाते हैं. आपका एमएसएमई लोन्स, एसएमई लोन्स आज के डेट में एज वी स्पीक इज anywhere in the range of 9 to 12.5% depending on the bank that you are working with, right? अगर बिजनेसेस को मान लीजिए 10 से 12% पे लोन दिया जाता है, और आप में से कई है जो बिजनेस बैकग्राउंड के भी बिलोंग करते होंगे, आप मुझे ये बताइए, अगर आप लोन लेते हैं बिजनेस चलाने के लिए जिसपे 12% ब्याज आपको भरना पड़ रहा है, तब आप आपका प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 15% रखोगे या नहीं, राइट? इजंट इट लॉजिकल दैट आपको एटलीस्ट 15% जितना प्रॉफिट कमाना होगा धंधे में, तब जाके आप 12% तो बैंक को ब्याज चुका पाओगे, राइट? सो जब ये कंपनीज 15% प्रॉफिट्स बनाते हैं ये लॉजिक से, तो ये 15% का जो अर्निंग्स ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं उनके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड, राइट? और आप देखोगे ये जो मैथमेटिक्स है ये हमेशा इन्फ्लेशन के आगे ही जाता है, राइट? इन्फ्लेशन से बढ़ के रिटर्न्स जनरेट करता है. सो स्टॉक्स, इक्विटीज आर गुड वंस, बट आप बोलोगे कि यार तो फिर सारा पैसा निकाल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, नहीं, बिकॉज उसके साथ एक रिस्क अटैच्ड होता है, और वो रिस्क का वो जो रिस्क है वो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न्स नहीं दे पाएगा, शॉर्ट टर्म में घाटा भी लग सकता है. ये काफी लॉन्ग टर्म के लिए होता है. जो आपके शॉर्टर टर्म गोल्स है उसके लिए आपको एफडी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर मान लीजिए आपको एक साल में आपको एक मान लीजिए आपको एक 6 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है और आपके पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं और 1 लाख हो जाएगा 6 महीने में जमा, राइट? और पूरा कैश पे खरीदना है, तब आपको एक साल बाद वो पैसे रेडी चाहिए. आपको फर्क नहीं पड़ता उस पर 10% ब्याज मिला या 5.5, आपको वो 5 लाख सही सलामत चाहिए एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो फॉर दैट लिक्विडिटी यू यूज एन एफडी, राइट? अगर आप और आगे जाओगे तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो 3 साल के लिए, 5 साल के ऊपर के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो. अगर आपको स्टॉक समझता है तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन ये सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टाइम, ठीक है? हम में से काफियों ने बचपन में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यू नो, आई एम नॉट श्योर, बट गुजराती में आई फील दे कॉल इट चक्रवृद्धि ब्याज, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, yeah, okay, good.
I haven't really forgotten it. So जो compound interest formula हमने पढ़ा है उसमें अगर हम I know बहुतों को याद नहीं होगा but मैं याद दिलाता हूँ, right? एक कंप्यूटेशन होता था कि अगर आप एक अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई करते हो एंड यू रेज इट टू अ पीरियड, ठीक है, एक फॉर्मूला होता था कि p ब्रैकेट में 1 प्लस r रेज टू n, ठीक है, जो रेज टू n होता है ना वो होता है टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल. इट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियलिटी. मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ. व्हाई इज एक्सपोनेंशियलिटी सो पावरफुल? मान लीजिए दो फिगर्स देता हूँ आपको, दो डिजिट्स 2 and 3. You can do anything that you want with it, but give me the largest result. Let's see what can we do with it. We can do 2 minus 3 या 3 minus 2, right? Let's say 2 minus 3 करते हैं, minus 1 होता है, छोटा हो जाता है, right? We can do 2 divide by 3, 0.67 हो जाएगा, still बहुत छोटा. एक काम करते हैं, 2 plus 3 करते हैं, 5, which is larger. 2 multiply by 3 करते हैं, which is 2 3s are 6, which is even larger. Now if I say 2 raised to 3, जिसको 2 cube कहा जाता है, 2 raised to 3, उसका आंसर क्या होता है? 2 into 2 into 2, 3 बार, right? That makes it 8, and that is the largest output that you can derive out of these two figures, right? If you swap it, you can make it even larger. 3 raised to 2 is 9. 3 3s are 9. But you realize the exponentiality is where you get the highest. ये जो exponentiality बोल रहा हूँ, ये कुछ नहीं, it is to the power of या raised to जो कहा जाता है, जो ऊपर में आता है कि x raised to y, ये जो raised to है, that is the power of having an exponential. Compound interest के formula में भी exponential में एक ही variable होता है और वो होता है time. So जो power आपको time दे सकता है ना आपके investments की बढ़ोतरी के लिए, वो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं दे सकता है. लेट अस डू अनदर वेरी स्मॉल एक्सरसाइज. आई रियलाइज कि बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स की क्लास हो गई और मैथमेटिक्स की क्लास में थियोरी सुन के काफी एक बोरिंग सा माहौल भी छा जाता है. वन वेरी लास्ट एक्सरसाइज दैट विल डू बिफोर वी जंप इनटू द Q&A इज let me give you an example. Let's say I have a BMW which costs 50 lakhs, okay, and I give you guys a deal, a simple deal, okay. I'll tell you, एक काम कीजिए, आप ना ये BMW कार मेरे से ले लीजिए, मेरी वाली बहुत नई है, ब्रांड न्यू है, पेपर सारे क्लियर है, डोंट वरी, आप ले लीजिए. आप एक काम कीजिए, मुझे आज 1 रुपया दीजिए, ठीक है, कल 2 रुपया दीजिए, परसों 4 रुपया दीजिए, डे ओवर डे उसको केवल डबल कीजिए आप, और ये केवल 30 दिन के लिए करना है आपको, 1 महीने से भी कम में ये BMW आपकी, मुझे केवल ये पेमेंट कर दीजिए. How many of you will take the deal? Yes or no, and why? I will want the why also this time. Will you take this deal? Trust me, it's a very beautiful car. You want it. नहीं तो लोग बोलेंगे हमें क्या जरूरत है, BMW नहीं चाहिए, स्कैम लागे. No? Okay, Shriti, no. Ashray, no. Yeah. Okay, deal, money at the end of 30 days would be bigger than the original amount. Okay, very smart. I know you just have a thing to not believe anything too good to be true. And but I also want a proper reason. I want a mathematical reason. कि भाई આટલો સ્માર્ટ છોકરો છે, પોતાનું નુકસાન તો નહીં કરાવે. You'll be smart enough to not incur a loss. So you are not backing on mathematics, you're backing on my intelligence. Don't do that. Henil Patel ने बोला 2 raised to 30 is large. So it is not exactly 2 raised to 30. It is going to be 1 का double 2 का double 3. So it's going to be a summation of 1 raised to 2 plus 2 raised to 2 plus ऐसा आगे करके. But let's say कितना ज्यादा होगा? चलो give me an estimate. चलो ये तो मान लिया कि मैं बहुत ज्यादा लूंगा आपसे, मैं नुकसान तो नहीं कराऊंगा खुद का. But तो भी how much do you think am I going to take away from you at the end of it? At the end of 30 days. Just put in your random figures. It's not a mathematics class. Don't worry. Just put in random figures. શું લાગે છે તમને અંદાજે? Like just mota. Come on guys, give me a number. Parents, the teachers are looking at you.
Teachers, the parents are looking at you. Please, don't worry. See, guys, this is actually a complex math. You need not be correct. Okay, this actually requires a calculator. I have done the calculation, and इसलिए I'm asking you guys. Okay, so don't worry. You can be wrong. ये mental maths में नहीं हो सकता. 30 lakhs, 1 crore. Nice, lovely. Keep it coming, guys. Keep it coming. You think 50 लाख की गाड़ी मैं सिर्फ 1 करोड़ में बेचूंगा? 1 करोड़ 7 लाख. Okay. Dhwani says 4,16,000. Dhwani, I'm so sad. You feel मैं घाटे में गाड़ी बेचूंगा 50 लाख की. Yeah. Average 2 crore. Okay. Let me help you guys. If you do a total ना, मैं total करके बैठा हुआ हूँ. Excel पे वो भी calculator पे नहीं Excel पे. Right? Okay, Hriday has given something that looks like a phone number. 53687. Okay, गाना पर थोड़ा comma लगा दो. 53 crores. Okay. 68 lakh. Okay. I have done the math. It is 107 crores. Do the math for yourselves. 107 crores. Yeah? And all this while you were thinking, आपके बच्चे लोग देखते देखते बड़े हो गए. 30 दिन में 1 रुपया इतना बड़ा हो जाता है. Right? So guys, this is the power of compounding. This is what time does. Okay. You need to have a great rate. You need to have, you need to let it stay invested for a very long time. Guys, inflation is a real problem in other education inflation. There was a national survey that was done, and education inflation is also growing really, really high. अगर आप देखोगे तो primary education has at an average level has increased versus 2014 to 2019. આ 5 વર્ષમાં education inflation for primary education has increased by at least 31%, average of 31%, secondary education by almost 18%, and post graduation education by at least 10%. Right? It is a real thing. It is getting costlier. Right? Education is getting costlier. Life is getting costlier. अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे बहुत ही रैम्पेंट सा चल रहा था किस्सा, जो केटो वगैरह करके साइट्स होते जो फंड रेजिंग करते फॉर दी नीडी, राइट, फॉर दी नीडी. आपने भी एड्स देखे होंगे फेसबुक पे कि किसी को कुछ बीमारी है, कुछ तकलीफ है, वो फंड रेज करते पब्लिक से कि आप प्लीज सहायता कर दीजिए, डोनेशन कर दीजिए. राइट? वहां पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा एक केस दिखा था केटो पे. एक 23 साल की लड़की है जिसको हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया है, लेकिन उसको 23 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं. Right? And she can't go to Harvard. She's going to the public. She's asking for donations. And obviously, India, people are like, "Atla paisa ho to pote Harvard donation seat lai le." Atlu paisa. Like I don't have that kind of money to spare for just for your education, right? Loan le le. But taking a loan is not that simple. It's not straightforward. Taking a loan. But this is a real problem. Think about it. Someone so capable who got an admission into something like a Harvard just cannot go because she just doesn't have the money. और लोन मेल मिला के भी वहां पे रहने का, खाने का खर्चा भी तो होता है. वो पैसा तो बैंक नहीं देगा आपको, वो पैसा तो घर से ही मिलता है. राइट? और बच्चा है, अभी तक कमाने लगा नहीं है. उम्मीद है कि किसी दिन अच्छा पढ़ लिख के कमाएगा, बट उसके लिए उसे सक्षम तो हमें ही बनाना है. We have to contribute. Just imagine at that point in time, when you look back and once again read about this Chakravrti Vyaj, you're going to remember this day and you're going to realize and do the math for yourself कि अगर 30 दिन में 1 रुपए को हर दिन डबल करके 107 करोड़ किया जा सकता था, तो अगर मैंने कोई SIP अगर चालू कर दिया होता तो आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में लगता. I feel the worst thing a worst guilt that one can go through is having a highly capable child who is not given the opportunity due to our lacking, right? Or at some point in time having the ability, touchwood, each one of you are probably earning really well, but ये सब होते हुए not being able to retire in a happy way. I feel that is something that has no looking back. You cannot go back in time, right? I feel time is money, and this is why time is money. It is mathematical, it is logical.
you compound your money over a period of time. If you reduce the period of time, your money does not compound that well. So compounding of money is important. Investing in assets more than inflation is important. Dividing your assets into different FDs, bonds, mutual funds are important. Respecting your money is very important. You remember, right? Respecting your money is very important. These are the key tenets that lead to a great personal finance layout. So I feel I gave a pretty long monologue. I feel I spoke for quite long, but I hope this was a great interaction, a great engagement. I want to open the floor for more questions. And I know there are a few topics that I haven't spoken about, including the biggest topic, that is retirement. But I'm expecting one of the questions to come from you guys on it. I'm counting on you guys. So Janki, I feel that's from my side. I would love to interact and take up questions. Thank you so much, Nirav. And we are actually spellbounded with the realization which you have made us to do right now. I am personally very guilty. So come on, everyone. So do we have, I am very sure that we have lots of questions with us. So please raise your hands and we'll take up. Come on, guys, feel free. You can test me, ask me good, interesting questions. Let's see how we can tackle it together. Okay, till then, when before anybody comes up, I have a burning desire to ask this question. Like, आपने अभी बोला जैसे कि time is money actually, and compounding your money is very important. So, according to you, what is a good way? Like, is it SIP which is more, which you suggest, or should we go for equity and mutual fund? उसमें ज़्यादा risk रहता है, आपने जैसे बोला. तो would you think that SIP is a best option? Yeah, so I feel fantastic question. I work with a variety of products, basic financial products, like a most exotic product. I've seen a lot of them, and it all works in their own respects. But I feel for a normal lay person, right, a great starting point is an SIP. An SIP is a systematic investment plan that is done into mutual funds. Also, it is important you take some professional help, professional counsel at the same time. As we speak, इंडस्ट्री में 5,500 म्यूचुअल फंड से ऊपर है, राइट? सो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है ये जानना भी जरूरी है, लेकिन ये हर एक का एक यूनिक फिटमेंट होता है. वी कॉल इट पर्सनल फाइनेंस बिकॉज इट इज पर्सनल, राइट? इट नीड्स टू बी यूनिक. एक वन साइज फिट्स ऑल वाला जो किस्सा है वो यहाँ पे नहीं चलता. सो once you figure that, I feel an SIP, a systematic investment plan, is the best way to go about with it. The number one reason is the nature of an SIP. An SIP, basically, most people do it at a monthly frequency, right? कि आप ये समझ लीजिए, it's like a good EMI and a voluntary EMI, जो आप आपके फ्यूचर के तरफ भर रहे हो, फ्यूचर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के तरफ भर रहे हो, या फाइनेंशियल वेलबींग के तरफ, कि हर महीने आपका एक अमाउंट बांध दीजिए कि ये अमाउंट ऑटो डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्ट हो जाएगा, जिसको आपको काफी लंबे समय तक नहीं देखना है, या फिर आपका कोई फाइनेंशियल गोल होगा तब तक तो आपको नहीं छूना है, राइट? एंड ये जो फंड सिलेक्शन है, अगेन टेक प्रोफेशनल हेल्प, बट ये आपको करना है. ओके, दैट्स पॉइंट नंबर 1, दैट मेक्स इट अ गुड थिंग. पॉइंट नंबर 2, ये जो इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, ये सब में इन्वेस्ट करता है, ये सब समझना काफी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? We have professional fund managers who work day in day out to understand this. So they are, at least for most people, they are more capable in handling that money better, because that is what they do the whole day. That is their entire job. Their own job security, their growth depends on that. So they are doing it wholeheartedly, and these are highly professional and highly qualified guys doing and giving it their best shot, right? So that really टेक्स अवे. किसी ने हमारे इंटरेक्शन के दौरान किसी ने कहा कि यार मुझे नहीं लगता कि मुझे उतना नॉलेज है कोई सब्जेक्ट को लेके या कोई इंस्ट्रूमेंट. आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, अफोर्डेबल है आज के डेट में. आप एक फंड मैनेजर के भरोसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, कर लीजिए. आपको खुद जानना वो जरूरी नहीं हो, उससे तो आता है उसका काम, राइट? लेट हिम डू इट. द थर्ड गुड थिंग अबाउट इट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग. मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहता है, राइट?
आप हर बार सोचोगे यार अभी तो मार्केट नीचे, अभी नहीं करता हूँ, यार अभी बहुत ऊपर है, अभी तो बहुत महंगा मिलेगा, नहीं करता हूँ। इस सारे चक्कर में एक जो कांस्टेंट रहता है ना, वो होता है अभी नहीं करता हूँ, और वो जो होता है वो आपका कंपाउंडिंग को मार देता है, बिकॉज वी सेड टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वी जस्ट स्पोक अबाउट इट, राइट। सो जो ये कमिट कर देते हो, दिस एंश्योर्स कि आप जब आप ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट करते हो तब आपको सॉरी जब आप ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट करते हो तब आपको भले कम यूनिट्स मिले, जब वो नीचे जाएगा तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलता है, एंड ओवर अ पीरियड वो एवरेज होते जाएगा, एंड दिस एंश्योर्स कि अगर मान लीजिए आपने आज 100 के भाव पे खरीदा और कल 50 के भाव पे खरीदा, तो आपके जो 2 यूनिट है ना वो 75 के भाव पे आपके पास है, right? Because you have 1 unit at 100, 1 unit at 50. That means you have 2 units at 150. 150 divided by 2 is 75. तो ना तो आप एकदम 100 पे खरीद रहे हो, ना तो 50 पे, और मार्केट जो हमने कहा कि गुड चांस वो इन्फ्लेशन बीट करता ही रहेगा। तो जब भी लॉन्गर टर्म में आपका एग्जिट करने का समय आएगा, देयर इज अ गुड चांस यू विल एग्जिट एट अ much better position. So SIPs into mutual funds, I feel is a great way to go about with it. It's a great starting point. Fund selection के टाइम पे थोड़ी असिस्टेंस ले लीजिएगा कोई प्रोफेशनल की, अगर आप में से किसी के पास नहीं है। Fisdom does it. You can write directly to my team. You can either write to our customer experience at ask@fisdom.com or write to the research team at research@fisdom.com. We'll see if we can help you in giving you any direction, guidelines on it. Or if you have someone who is trusted, who is qualified, who is professional, please do take some help while selecting it. But once you've done it, commit to it. I feel discipline is extremely important, and SIP does just that. So Janki, yeah, I feel SIPs into mutual funds are a great starting point. And it's ask@fisdom.com or research@fisdom.com. These are the mail IDs. Okay. So, sir, we have one more question from Vishal. He is asking for any recommendations as in websites or articles, video, or audio content which would strengthen their financial literacy. Oh, I feel we are on a gold mine of financial content. अब केवल Google कीजिए where to invest, you will have so many pages educating on you. Obviously आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कॉमन टोन क्या है हर एक में, आपको खुद का भी जजमेंट लगाना पड़ेगा, बिकॉज नो कंटेंट इज 100% ऑब्जेक्टिव, राइट। वो जो होती है, वो जो राइटर होता है या जो स्पीकर होता है या जो वीडियो बना रहा होता है, वो उसका पर्सपेक्टिव होता है, राइट, कोई भी सब्जेक्ट को लेके। सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट यू रीड ऑल ऑफ इट and you understand it, you discuss it with a professional who manages funds, or you discuss it with people who have a deeper understanding, and you fine tune. This is a long learning curve. I will not give out very specific names. In fact, fisdom.com हमारे website पे जाइए, we have a lot of educative articles. Fisdom research releases so many reports. आपको newsletters weekly मिल जाएंगे. If you just sign up on the app, etc., you'll keep receiving it also, and you'll get it on the website also. Fisdom is one such website. You can do it on multiple other. There is a treasure of learnings out there on the internet. Yeah. Okay. So we have. Thank you so much. So I feel some guys are dropping me a direct message. Guys, Yes, I won't be able to follow a direct message. Please type to everyone so that we can maintain track of it. Yeah. So Suraj sir has a question, like he's saying a mutual fund projects 15 to 25% of return, but the service charge and the inflation is not counted in that. So when the amount is deducted, what is the actual amount we will get? He thinks that he deeply doubt it, and is it a gimmick? Okay. Fine. I'll also start from the last line. There's also one last line. If this question does not make sense, please ignore. I feel this is a super sensible question. Super sensible. Okay. And I'm so glad you asked it. Right. Then I'll move upwards. I doubt it is a gimmick. Let me assure you, it is not a gimmick. Now let's go. फिर से ऊपर. Right. You said that a mutual fund projects 15 to 25% return. I feel it is not fair to say it is a projection. Markets are volatile. There could be historical performance which they have already delivered, but no one can really project. Okay, no one can really say for sure कि 15 से 25% बनेगा.
राइट. सो प्रोजेक्शंस म्यूचुअल फंड कंपनीज भी नहीं देते, एडवाइजर्स भी नहीं देते. सो अगर कोई दे रहा है, यू मस्ट रियली आस्क हिम और हर इफ ही और शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू गिव अ प्रोजेक्शन, बिकॉज दैट डज नॉट वर्क. प्लीज अंडरस्टैंड, एनीवन टेलिंग यू विद अ सर्टेन सेंस ऑफ श्योरिटी कि एक X परसेंटेज आपको मिल जाएगा, ही और शी इज ईदर सिटिंग विद अ क्रिस्टल बॉल और इज लाइंग, राइट. दोनों में से एक ही हो सकता है. सो the best efforts is made to create a inflation beating long term great returns over a longer period, and it has done so since the past couple of decades. Okay, that is there. You said when the amount when we receive the return, inflation is not counted. Okay, inflation is not counted मतलब आपको अगर मान लीजिए फॉर इंस्टेंस आपको अगर 15% रिटर्न बनता है, वो आपके कंप्यूटेशन के लिए कि 10% तो इन्फ्लेशन ही खा जाएगा, उसके ऊपर मैंने 5% रिटर्न बना है. रिटर्न तो वो सारा का सारा आपको दे देगा. सो रिटर्न्स आर नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, वो आपका पर्सनल एक कंप्यूटेशन होता है. तो रिटर्न तो आपके पैसे जितने कमाए हुए हैं वो सारा का सारा रिटर्न आपको मिल जाता है. दूसरा आपने कहा कि सर्विस चार्ज डिडक्ट होता है. Service charge in mutual fund industry we call it total expense ratio. That is the expense that is charged on a particular fund. ये जो होता है ना, ये open source होता है. In fact, let me give you a perspective. आप में से काफियों ने काफी सारे instruments में invest की होगी. Okay, and once again, this is the subject of how much do you respect your money. Do you really know उस पे कितना charges लगा या कितना commission cut हुआ? Do you really know it? Right. So let me give you an insight into the mutual fund industry also. जो total expense ratio होता है ना, the mutual fund industry is amongst the strictest governed industries. Okay, I'll say there are many, but mutual fund is one amongst them. सारा जो disclosures होता है ना, वो transparent होता है, public domain में होता है. आप अगर केवल Google करके देख लोगे ना कि XYZ mutual fund expense ratio और total expense ratio, हर एक साइट पे ट्रांसपेरेंटली उसको छापा जाता है, क्योंकि जो सेबी है, which is a very strict regulator, has mandated it, right? और अगर आप देखोगे ये जो टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है ना, दिस इज एनीवेयर बिटवीन 0.1% to maybe 2.5% sort of a thing, depending on the fund. Okay, it is very rare to get a fund that charges more than 2.5%. इस पे भी रेगुलेशन काफी क्लियर है कि उससे ज्यादा नहीं कर सकते, राइट, एक फंड को चार्ज. सो द रेगुलेशन इज एंश्योरिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. आई फील इफ फॉर अगर मान लीजिए आपका SIP अमाउंट मान लीजिए कितना है, 1 लाख रुपए, राइट. 1 लाख रुपए के लिए आपको चार्ज किया जाएगा मान लीजिए 2,000 रुपए या 1,500 रुपए आपके 1 लाख रुपए मैनेज करने के लिए. ठीक है, आपके फंड पे चार्ज किया जाता है. बट फॉर दिस यू हैव अ सुपरबली क्वालिफाइड टीम. मान लीजिए ये आपके 1 लाख रुपए मैनेज करने के लिए पीछे मिनिमम 20 से 25 रिसर्च एनालिस्ट, एक 8 से 10 फंड मैनेजर्स की टीम, एक हाईली क्वालिफाइड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर. ठीक है, एंड दीज आर गाइज हु आर लाइक सुपरबली क्वालिफाइड. ओके, आप ये भी ओपन डोमेन में आप सर्च कीजिए कि इनके क्वालिफिकेशंस क्या है. अब मान लीजिए आपको केवल 1,500 रुपए साल के, ठीक है, साल के 1,500 रुपए के लिए आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, राइट. अगर उसको 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बोल दे, जो कि बहुत सारे लोग 10,000 की भी करते हैं, तो 150 रुपए के लिए आपको ये पूरा टीम मिलता है जो आपके लिए काम करता है, राइट. आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील, अगर जो आपको कमा के भी देता है. अभी आप समझिए कि अगर उनको कोई इंसेंटिव नहीं है, व्हाई विल दे वर्क? एंड आई फील दिस इज अ वेरी स्लिम मार्जिन दैट दे आर चार्जिंग. अगर आज के डेट में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, तो आप ब्रोकरेज कितना भरते हो एक रियल एस्टेट बाय करने पे? 2% ऑन एन एवरेज. Yeah, on the entire real estate piece, 2%, along with the problems that come along with real estate like illiquidity. आप गोल्ड खरीदते हैं तो आप मेकिंग चार्जेस तो भरते हैं. मेकिंग चार्जेस तो जो औरतें रहेंगी इस ग्रुप पे वो जानते ही है बखूबी कि मेकिंग चार्जेस इज द रियल किलर. या that's the worst thing that they do. Like एक आंख में खुशी होती है वो ज्वेलरी देख के, दूसरे आंख में आंसू होती है वो मेकिंग चार्जेस देखते हुए. एक मन में आता है कि यार सोने का भाव तो भर दूं, लेकिन ये मेकिंग चार्जेस क्या होता है, राइट. इट गोज एनीवेयर 5%, 10%, 15, 18, 20. आई हैव सीन 25% as well in making charges in select outlets, क्योंकि बोलते हैं वो हाथ से कारीगरी किया हुआ हैंडमेड है सर, राइट. तो भैया मशीन से कर लो. बट जोक्स असाइड, मेकिंग चार्जेस आप वहां पे भी भर लेते हो गोल्ड के लिए. जब आप गोल्ड बेचते हो तो ये मेकिंग चार्जेस डिडक्ट होते हैं, राइट. आपको पूरा वैल्यू नहीं मिलता, वहां पे घट जाता है आपका. अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं तो केवल
सोने की गिन्नियां और ब्रिक्स खरीदता हूँ या खरीदती हूँ, पैकेजिंग चार्जेस भी लगते हैं, जीएसटी भी लगता है, राइट, उस पे भी, राइट. Do you think it is really bad to pay 1.5% for a year to a mutual fund manager who is really going to be working hard to help you make money? I will ठीक है, let's cut some slack to people. अगर guys, generally free is not the best thing. जैसे कि आप सभी ने देखा कि जब मैंने वो BMW वाला उदाहरण दिया, so many of you were just not interested because नहीं भाई, ये अगर 1 रुपए से शुरुआत कर रहा है, ये कहीं ना कहीं तो मेरा ही घाटा करके जाएगा, राइट. So you must think about the same way. अगर कोई फ्री की बात कर रहा है तो 2 बार सोचे कि वो फ्री क्यों है, because things that are valuable come at a value, right? So चार्जेस है, आई विल नॉट शाई अवे, बट ये चार्जेस ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, आपके देखने के लिए है, एंड इट इज ऑल वेरी क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट. आप लॉग इन कर लीजिए, देख लीजिए, और ये चार्जेस है. अगर अगर मान लीजिए अगर आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली और आप 8% कमा पाते हैं, और अगर आप इनको 1.5% फीस भर रहे हो, और अगर ये आपको 10% से ज्यादा भी कमा के दिए तो आपका वसूल हो गया ना, बिकॉज 8% आप खुद से कमा सकते हो. नॉलेज के वजह से आपने 2% ज्यादा कमाया और 1.5% उनको दिया, फिर भी आपने 0.5% ज्यादा ही कमाया जो आप खुद से कर सकते थे. आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि हमें क्या वैल्यू मिलती है मोर देन वो क्या कमा रहा है मुझसे, राइट. एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट सी व्हाट इज द वैल्यू दैट आई एम going to get out of it. If I can employ such great people at such a affordable cost, why not, right? Generally अगर आप देखोगे इसमें से काफी जो इतने क्वालिफाइड लोग हैं उनके, अगर आप जस्ट बाय द वे इनके सैलरीज वगैरह भी ओपन होते हैं काफी लोगों की, जो सेबी डिस्क्लोज करता है. अगर आप देखोगे these are guys who are earning in some really good amount, okay, like I'm talking about some really fat checks. It is because they're that valuable, they bring that intelligence, that hard work to the table, right? And for that just imagine अगर एक asset management mutual fund company को इतने पैसे देके उसको एम्प्लॉय करना पड़ता है, और आप वही सेम बंदे से आपका काम करवा रहे हो मात्र 150 रुपए में 10,000 मैनेज करने के लिए, you are getting a deal, you're getting a good deal out of it, in my opinion. So yeah, so there are charges, but don't be too put up, is my opinion. Yeah. So, sir, one last question, and we move towards the end of the session. So, there is a question like, what is Bitcoin investing right now? If we see abhi modernization में अभी Bitcoins में ज़्यादा youth is also getting inclined to कि Bitcoins में fast money बनता है. So. Yeah. I feel Bitcoin, cryptocurrency, these are subjects that I'm really fond of. Okay, I follow it, I track it to a decent degree as an enthusiast, not as a professional, as an enthusiast. I'll tell you one thing right off the bat. If you ever hear someone saying anything that sounds like 21 दिन में पैसा double, run away. ठीक है. Good things take time in life. It requires hard work. It requires commitment. There's no such thing as a free lunch. Okay, पहली बात तो ये. दूसरा, you might get lucky once in a while. लाखों में से एक को तो लॉटरी लगती भी है, right? You might get lucky, but you must also be doing something that is legal. Right now, जिस हिसाब से directions चल रहे हैं Bitcoin वगैरह पे, right? आप देखोगे कि regulatory clarity उतना 100% नहीं है. It is in the gray area right now. You don't even know whether it is 100% legal or not. In fact, from a very practical standpoint, it is almost virtually, for practical purposes, you are better off considering it as illegal and staying away from it. Okay, that's point number 2. Point number 3, Bitcoin as an asset class, it is very volatile right now. I feel there are a few generations before it achieves maturity as an asset or a currency or a commodity. आज के डेट में तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बिटकॉइन को एसेट क्लास कंसिडर करते हो, इक्विटी फिक्स्ड इनकम जैसा, या आप उसको करेंसी ट्रीट करते हो रुपीस और डॉलर जैसा, या आप उसको कमोडिटी ट्रीट करते हो गोल्ड या सिल्वर जैसा, कुछ तो होना चाहिए, राइट? I'm sure you won't have a very sure answer about it. You might have an opinion, but can you really back it? So जहां तक ये confusions रहेंगे, I feel it is best to steer away from it. Also because अगर इतना risk है, अगर
कितना लीगैलिटी कॉम्प्लिकेशंस है, अगर इतना उतार चढ़ाव हो रहा है. हमने हाल ही के दिनों में देखा कि बिटकॉइंस हैव क्रैश्ड, okay, like phenomenally. People have lost millions and millions of dollars in cryptocurrency, not Bitcoin specifically, but other cryptocurrencies, right? Why do you want to do this when you actually have a straight route? Yeah, when you actually have a clean area to operate. You know, when when you realize that आज का हमारा discussion इसी से शुरुआत हुआ था, that does your pocket have a hole or not? जब हम ये स्थिति में, हम ये करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, right? I feel let's take the clean path, okay? I feel committing to good investment avenues, there are so many. आप देखो तो गवर्नमेंट के कितने सारे योजनाएं हैं, NSC, PPF जैसे कितने अच्छे म्यूचुअल फंड्स है, पूरा कैपिटल मार्केट आपके लिए खड़ा है यहाँ पे, आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, कोई कमी नहीं है. There is really no need for you to go there unless you are very greedy or you're trying to make money quick, but then that comes with its own set of challenges and downside. Be very sure of what you're doing. In my opinion, long story short, you know, there's no requirement for you to, you know, invest in cryptocurrencies as yet, okay, because majorly of the regulatory clarity. And dusra, you have good options available. If you can live a good life, why live a complicated life? You know, if you can sleep peacefully at night, why choose to not sleep peacefully at night, right? So yeah, that's what I feel about it. Okay, so thank you. That gives a very good insight. We hope that all the students are here and even the teachers are here. So let's now move toward the end. Vipin sir would like to request you. First of all, thank you, Nirav sir. It's a wonderful insights, understanding the finance credential. Somewhere it was also like, a bit embarrassing that we are so ignorant of so many things, we should know about life and the finance. But it was wonderful, like, the way you have explained, starting with the hole in the pocket, which we really like, though it was very simplest way to understand, like everybody has a hole in it. I do realize that, it's a big hole, and everybody has understood that. Story about khichdi, knowing it, like, if you don't realize it, if you don't understand the importance of a time, it's going to be the khichdi at the end of the day. That's like in the message in a very simplest way. Hope everybody have understood. So even a lot of questions that you have taken up from the audience, and it's I think a lot of insight, a lot of understanding about the finance, that in a very simplest way, and like that you have explained. Wonderful session. We were thoroughly enjoyed understanding from you. Hope from this lot of learning that guys have taken up. Thank you for your valuable time that you have given us 1 hour. I didn't realize, like, that we have talked. It's like 1 hour. Thank you on behalf of Amrit Vidyalaya. Love to see you, more interaction, particularly with the commerce guys that we have here. Of course, we would love to join with them as well. Thank you so much. Thank you, Vipin. Thank you, Janki, and thank you, audience. Guys, you have been an amazing and engaging audience. I feel, I personally did not realize time khatam ho gaya. I just got a time check. I checked ki haan yaar, because you guys were so interactive and engaging. I feel you did not, let me realize that we are so far away from each other and talking in small boxes. I'm so glad that, I got this opportunity to interact with such interactive and such interested set of audience. Okay, lastly, Unnati ma'am is raising hand. I'm really, yes, ma'am, Unnati ma'am. ओके सर, मुझे बस यही चीज बतानी थी कि जो अच्छा लगा मैं आपको शेयर कर रही हूँ. आपकी शुरुआत मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो आपने गुजराती के बारे में बोला ना, वो एकदम परफेक्ट 100% सही है.
तो वो चीज तो एकदम सही थी आपकी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपने बताया ना, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, तो बहुत अच्छे से वो क्लियर भी हुआ। और एक चीज ये भी बताना चाहूंगी आपको कि आपने जिस तरह से जो समझाया ना, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा जो इन्वेस्टर है, जो मतलब जिनके पास में ऐसा है म्यूचुअल फंड को बता दिया, वो जो समझाते हैं ना, तो मैं 1000 क्वेश्चन करती हूँ। मैंने बोला ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं, लास्ट में वो मुझे यही बोलता है, मैम आप चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा डूबने दो। तो बस मतलब फिर बाद में वही छोड़े थे, जो आपने बोला 15 पेजेस वाला। तो वो चीज सही थी कि वो उसको होता है, लेकिन एक चीज मुझे मतलब वो भी जाननी थी, जैसे आपने वो बोला था ना कि डबल करना, वो आज 1 रुपया दो, वो दो, तो वो मेरे दिमाग में भी कभी आता है कि मेरी इतनी एज हो ना, तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, तो मुझे किस तरह से वो इन्वेस्ट करने चाहिए। जैसा सपोज मेरा ही मैं खुद का एग्जांपल दूं, मेरे पास चाहे 2000-3000 भी ज्यादा आ जाए ना, तो मेरे दिमाग में वही रहता है कि मैं कहीं और जगह पर कोई अच्छी सी एसआईपी ले लूं, कोई अच्छी जगह पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दूं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो दिमाग में रहता है। वो अकाउंट में हो गए तो पैसे खर्च करने को मन करेंगे, इससे अच्छा है कि अकाउंट में रखना ही नहीं है ज्यादा। तो ये चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि हमें किस तरह से वो इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा कि आप बोल रहे हो कि कुछ एज के टाइम हमारे पास एटलीस्ट इतनी अमाउंट होनी चाहिए। बस फटाफट ये बस इतना आप बता देता। सो उन्नति, आपका सवाल तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, पर इसका जवाब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज जो जो मैंने कहा कि पर्सनल फाइनेंस जो होता है वो काफी पर्सनल सा होता है, हर एक को यूनिक होता है। इसमें और बहुत ज्यादा जानकारी समझने की जरूरत है कि आपको किस फाइनेंशियल गोल के लिए कितना अमाउंट कब कब जरूरत पड़ सकती है, आपको कितना रिस्क एपेटाइट है आपका, मैं किस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे काफी सारा इंट्रिकेसीज होते हैं इस डिस्कशन में। ये जो है, आई फील आप किसी को भी ये सवाल पूछेगा तो नो वन can and no one ideally should just give a response, because it requires more inputs from you than inputs from me. आपसे काफी कुछ समझने की जरूरत है, तब जाके मैं आपको एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शनैलिटी दे सकता हूँ, बिकॉज जो आपके लिए सही होगा वो शायद किसी और के लिए नहीं सही होगा। सो इसको बहुत न्यूआंस तरीके से, लाइक आई ऑलवेज सेड, always respect money, and when I respect money, I respect individual needs for that money also. आपकी जो needs होगी, आपके जो goals होंगे आपके पैसे के लिए, वो बाकियों से काफी अलग होंगे, and to respect that, I'll need to understand more and do to the best of my ability to help you. So इसीलिए although मैं आपको एक जवाब दे सकता हूँ कि आप मोटा मोटा यहाँ पे डाल दीजिए, में थोड़ा डाल दीजिए, एमएफ में थोड़ा, it does not help anyone. वो केवल जवाब के तौर पे टिक मार्क एक्टिविटी हो जाएगा, बट वो आपकी सहायता नहीं करेगी। इसलिए मैं ये रिफ्रेन करो कि आपको एक लूज स्टेटमेंट ना दूं। मैं आपको जब भी whenever if ever we get into this conversation, I leave you with more insightful response instead of leaving you hanging once again कि आप मोटा मोटा इसमें उसमें कर दीजिए। इसलिए I hope you understand that's where I'm coming from. I think that was a wonderful answer, and it makes sense, like, just not going directly giving the advice, but it is required like a personal investment and a personal understanding that for a personal account, that's very important. Thank you so much, sir. Answering to even last questions in that Unnati had, we close here. We close this session here. Thanks so much coming here. Thank you, guys.